okay, the expeditions which जिसके बारे में बात कर रहे हैं author जो जॉन म्यो undertake करते थे. On these expeditions, he had disciplined himself to endure hardship. Okay, for his notebook, for मतलब कि as his notebooks disclose the fact that he often went hungry and sleep in the woods or on the open prairies with no cover except the clothes he wore. अल्टीमेटली इसके थ्रू क्या बता रहे हैं कि अल्टीमेटली बच्चों ऑथर क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. ऑथर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं the perspective and he's addressing the perspective of Mio. And now here he's saying that जो expeditions पे जब Mio जाते थे. अच्छा Mio, if I give you the context, John Mio is a mountaineer. ठीक है, mountains climb करते थे. So क्या बता रहे हैं कि how what all hardships he endured. क्या करते थे वो, भूखे रहते थे, स्लेप्ट इन द वुड्स मतलब कि जंगल में सोते थे, खुले में सोते थे, उनके पास कुछ नहीं होता था except for the clothes he wore. Oftentimes, Mr. Mio writes in some unpublished biographical notes. Oftentimes, बच्चों देखोगे तो यहाँ पे elaborate हो रहा है ये, यहाँ पे इस चीज का continuation है. This is just an explanation. This is just, I can say, it is a modifier. Oftentimes, I had to sleep out without blankets and also without supper or breakfast. But usually I had no great difficulty in finding a loaf of bread in the widely scattered clearings of the farmers. ठीक है, तो बच्चों इसके थ्रू ऑथर दिखा रहे हैं कि जो जॉन म्यूर ने बहुत सारे हार्डशिप्स को इंड्योर किया. एंड दिस इज रिपीटेशन, उसी रिपीटेशन उसी बात को वो आगे बता रहे हैं कि दैट ही हैड टू that Mio has referred that sometimes he had to sleep without blankets and also without supper and breakfast, but he had no great difficulty in finding a loaf of bread जो उनको farmers की clearings में से मिल जाता था. ठीक है, with one of these big backwood loaves, I was able to wander many long wide miles free as the winds in the glorious forest and bogs, gathering plants and feeding on God's abounding in inexhaustible spiritual beauty bread. इसका मतलब बच्चों आप ये समझ सकते हो कि जो म्यो है, he loves to explore the nature, he loves to spend time in wood, and he loves to spend time spend his time exploring. And उनको जंगल में रहना पसंद था, उनको नेचर के बारे में समझना पसंद था. what we can understand that Myo has a perspective of Myo loves to understand the nature. And even after he's enduring all those hardships, he's not concerned about those hardships, and he is very positive about the other things linked with nature that he is experiencing. Only once in my long Canada wanderings was that the deep peace of wilderness savagely broken. Okay. It happened in the maple woods about midnight when I was cold and my fire was low. I was awakened by the awfully dismal howling of the wolves and got up in haste to replenish the fire. Had it not been for the accidental injury to his right eye in the month of March 1867, he probably would have started somewhat earlier than he did. ठीक है. In a letter written to his friends on the day after the accident, he refers mournfully to the interruption of the long cherished plan. ठीक है. इस एरिया में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं that he used to enjoy all his expeditions, but one day he faced something unusual, something bad. He faced something. He faced a problem. और उनका क्या था, उनको एक एक्सीडेंटल इंजरी हो गई थी उनको आई में, जिसके चक्कर में उनका जो एक्सपीडिशन था वो उनके जो एक्सपीडिशन थे, उनका जो प्लान था वो कहीं कहीं हिडर हुए थे. तो बच्चों इस पूरे पैसेज पैराग्राफ के थ्रू हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं. सबसे पहले तो ऑथर ने क्या डिस्क्राइब किया, ऑथर ने पूरे जो पैराग्राफ है उसमें डिस्क्राइब किया द हार्डशिप्स दैट ही okay, the hardships that he faced during his expeditions जहाँ पे था. but even after facing the hardships, we can say that
somewhere author shows the discipline of Neo, that even after facing the hardships, he was still disciplined. He enjoyed, he loved, he had the resilience to endure the hunger and everything, and discipline despite facing challenges. But he faced an eye injury which hindered or interrupted his plan. ठीक है? So this is what entirely the author is trying to convey here. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, ठीक है. For weeks, he writes, I have daily consulted maps in locating a route through the southern states, the West Indies, South America, and Europe, a botanical journey studied for years. ठीक है. But alas, I'm half blind. मतलब he was planning a lot of things, but he was half blind. My right eye, trained to minute analysis, is lost, and I have scars hard to open the other. Okay, so as जो आपको पिछले पैराग्राफ में बच्चों थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया था, उसमें क्या बता रहे थे कि he had an eye injury, जिसके चक्कर में he became half blind for some time, and he was devastated, not devastated, actually he felt bad about it, and he the plans that he had made, the long cherished plan that he had made, वो कहीं ना कहीं उसमें इस इंजरी ने हिंडर किया. तो okay, so this area, इतना part is showing that the author is not the mountaineer John Muir is not happy. The injury to his eye proved to be less serious than he had at first supposed. In June, he was writing to a friend, I have been reading and botanizing for some weeks, okay, and finding that for such work, I am not very much disabled. ठीक है. एक्चुअली फिर क्या हुआ बच्चों, इतने एरिया में हमको कैसा समझ में आ रहा है कि दैट इंजरी वाज टेम्पररी, परमानेंट नहीं थी, एंड एज टाइम के साथ साथ वो थोड़ा सा हील हुआ, एंड उनने अपने फ्रेंड को लिखा, आई हैव बीन रीडिंग एंड बॉटनाइजिंग फॉर सम वीक्स. बॉटनाइजिंग फॉर सम वीक्स मतलब कि I have been again in the nature for some time, and again I'm doing the things that I love, as in exploring the nature, and find that such work I am not very much disabled. In an account written after the excursion, he says, I was eager to see Illinois prairies on my way home, so we went to some place near the center of the state fence. Okay, so he wanted to explore something, so he went there. I botanized 1 week on the prairie about 7 miles south of P. To me, अब आपने देखा बच्चों, I am not even pronouncing these things. This is some city. This is some place. Just P. I have P in my brain. ठीक है. टू मी, अभी तक मैं लार्जर इसमें आइडिया क्या ले रही हूँ, इस अभी तक इस पूरे पैराग्राफ का लार्जर आइडिया क्या है, he faced, he had an injury but it was temporary, and after that he was again back on the track, he was back on the track, and he was again botanizing as in exploring and finding things, exploring things. To me, are all planets are more precious than before. My poor eye is not better nor worse. मतलब कि if what we can understand from here, my poor eye is not better nor worse, मतलब कि it does not matter me anymore. A cloud is over it. A cloud is over it, as in a cloud is over my eye. But in gazing over the widest landscapes, I am not always sensible of its presence. ठीक है, कितनी ब्यूटीफुल बात कही हमने यहाँ पे. हमने क्या बोला कि okay, I faced an injury, and I sort of recovered at least mentally, क्योंकि मेरी आँख तो जैसी है वैसी है. And he's saying that I have a cloud on my eye, but when I see in the over the widest landscapes, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता उस क्लाउड का कि मेरा आँख. ठीक है. I think it was such a beautiful passage about enduring the hardships. So how इनका मेन आइडिया क्या होगा बच्चों? 1 second. इस
पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बताया, द इम्पैक्ट ऑफ द आई, द इम्पैक्ट ऑफ द आई मतलब कि the author is shifting the narrative to the eye injury that John Hughes somewhere felt demotivated by it. But reflections post recovery मतलब कि even after facing all those hardships, his passion for the nature, the preciousness of plants, never, you know, all these things helped him to move on. And even if he was facing certain difficulties with his eyes, with this the injured eye, he never stopped and he moved on. His passion made him move on. So that was the entire passage. ठीक है, एक बार बच्चों मेन आइडियाज को वापस से देख लेते हैं, एक बार फ्लो ऑफ आइडिया को देखते हैं, एक बार चेन ऑफ आइडिया एक बार समझ लेते हैं कि किस हिसाब से पूरा पैसेज फ्लो किया। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने क्या किया, इंट्रोडक्शन टू जॉन म्योस पर्सपेक्टिव, एज इन जॉन म्यो loved to explore the nature, and the author discussed his temper and his eager interest in the every aspect of natural world. So this is the introduction to John Muir's perspective. सबसे पहले पैराग्राफ में उनने उनने इंट्रोड्यूस किया हमको जॉन म्यूर्स के पर्सपेक्टिव से कि how he is as a person and what he likes, मतलब more precisely what he likes to do. तो थोड़ा सा उसकी पर्सपेक्टिव से हमको वाकिफ किया कि he is into nature। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। सेकंड पैराग्राफ में what he did, the author the author showed कि सबसे पहले तो उन्होंने दिखाया कि उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, how he loved the nature, how he used to face all the hardships during his expeditions, but even after the hardships that he faced, वो हमेशा ना वो नेगेटिव बातों को थोड़ा कम रख के, मतलब वो बोलते थे कि मैं सो नहीं पाता, मतलब even if I he used to face the difficulty in the open woods and everything, and उनको कई 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 बार उनको फार्मर्स के थ्रू वो मिल जाता था खाना वगैरह, बट अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि चलो ये तो छोटी बातें थी, बट व्हाट आई enjoyed my work, वो यही बोल रहे हैं कि देखो ध्यान से, that he had difficulties as in he had to sleep without blankets, without food, but usually he used to get some bread from the farmers. So this is how, सबसे पहले उन्होंने जॉन म्यूर का पर्सपेक्टिव बताया, फिर उन्होंने बताया कि हार्डशिप्स ड्यूरिंग हिज एक्सपेक्टेशंस, द हार्डशिप दैट ही फेस ड्यूरिंग हिज एक्सपेक्टेशंस, बट कहीं ना कहीं पॉजिटिव लाइट भी दी और कि उनको ज्यादा ना उस चीजों से फर्क पड़ता नहीं था बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर नेचर। इट द लव फॉर his love for nature overshadowed all those hardships for him, at least he was not mentally exhausted by all those hardships। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ में ऑथर ने बताया कि उनको इम्पैक्ट हुआ था, एक टेम्पररी उनको इम्पैक्ट हुआ था उनकी जर्नी में, when he had an eye injury, but it was temporary, and he recovered at least mentally, and the injury was not able to, you know, नॉट एबल टू डीमोटिवेट हिम। एंड उसके बाद जब वो थोड़े से बेटर हुए, जब वो नॉर्मल हुए, तो उनने वापस से अपना एक्सपीडिशन चालू कर दिया। एंड इट वाज एंड उनके पैशन के आगे वो इंजरी और वो हार्डशिप्स को ज्यादा काम कर नहीं पाए। तो पूरे पैसेज में द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर इज टू convey the perspective of John Muir and how he endured hardships and came how he was positive about everything। ठीक है, now बच्चों let's do the questions। what we are going to do in the questions, as I have already told you, read the question, if you can predict the answer कि आपके हिसाब से आंसर क्या हो सकता है, उसके बाद ऑप्शंस पे जाएंगे हम लोग। ऑप्शंस पे जाके सबसे पहले योर टास्क वुड बी टू निगेट द वंस जो आपको लगता है क्लियरली आंसर नहीं है। उसके बाद चूज द करेक्ट आंसर। अभी आपके पास टाइम है, यू हैव 1-2 minutes, डू इट, डू दिस।
ओके बच्चों, लेट्स डू। ठीक है। जॉन म्यो, अर्थ प्लैनेट यूनिवर्स। म्यो wrote this in his book because what I can what I can predict the answer for this today. जॉन म्यो ने इसके बारे में अपनी जॉन म्यो wrote this in this book because I think because he loved the nature so much. He loved the earth, planet, and universe so much, therefore he wrote this in his book. According to me, it should be this. Let's see. John Muir, Earth, Planet, Universe. Muir wrote this because he did not have a permanent address. नहीं, इसकी तो बात ही नहीं बच्चों कि इसका permanent address है या नहीं हो. A very bad option. He wanted to be a traveler all his life. Okay, he wanted to be a traveler all his life. Why? And why? Please do not get distracted by the question. Question में पूछा गया है कि जॉन म्यो ने ये क्यों लिखा अपनी बुक में अर्थ प्लैनेट यूनिवर्स, बिकॉज ही लव्ड अर्थ प्लैनेट एंड यूनिवर्स, बिकॉज ही लव्ड the nature, because he loved to explore. He wanted to be a traveler all his life. Yes. Why? Because he loved the nature. He wanted to explore. So, partially correct. Not the reason why he wrote this in his book. His love for botany went beyond borders. Yes, I think it's a very good choice. Let's keep it on hold. Why is it a very good choice? Because Earth, planet, universe. मतलब कि he's trying to show that I love the nature and it is going beyond the borders. Earth, planet, universe. Okay. He wanted to live in the open all his life. वो ठीक है, उसको ओपन में रहना पसंद था, बट क्यों? बिकॉज ही लव द नेचर सो मच, therefore the answer is C. He wanted to be a traveler. He wanted to live in open all the time because he loved the nature. And प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। उनने म्यो ने ये क्यों लिखा था अपनी बुक में? बिकॉज इसलिए नहीं कि वो ट्रैवलर रहना चाहते थे, जैसे मैं लिख रहा हूँ। ही रोट दिस बिकॉज ही लव्ड द नेचर। ठीक है। अगेन यू हैव नेक्स्ट। आई होप आप लोग इसका आंसर सही से गेस कर पाए होंगे। विच ऑफ दीज डिड जॉन न्यू हैव नो ग्रेट डिफिकल्टी इन डूइंग? ओके ठीक है, एक बार करिए इसको। ठीक है। इफ यू वांट तो हम लोग वापस से इस पे जा सकते हैं। द क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिड जॉन न्यू हैव नो ग्रेट डिफिकल्टी इन डूइंग? ठीक है। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि उनको ज्यादा हार्ड, वो इतने पॉजिटिव थे कि उनको वो अल्टीमेटली वो हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव, मतलब उनका जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस था वो कहीं ना कहीं उस चीज को ओवरशैडो करता था, बट कहीं ना कहीं तो उनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी हुई थी, इसलिए उन्होंने शो भी किया था कि ठीक है, आई फाइंड दिस डिफिकल्ट, आई फाइंड दिस डिफिकल्ट, आई फाइंड दिस डिफिकल्ट, बट दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई रिमेम्बर इट इन पैराग्राफ नंबर 2। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी दिस ऑन दिस वन सेकेंड, कहाँ लिखा है? ओके। Oftentimes, I had to sleep without blankets and also without supper or breakfast, but I usually had no great difficulty in finding a loaf of bread in the widely scattered clearings of the farmers. Okay, so he had to sleep without blankets. Okay, he had not, he also had to sleep without supper or breakfast. And also, he disclosed that he often went hungry, slept in the woods or on open prairies on with no cover except the clothes he wore. ठीक है। बट हमको क्या मालूम है कि he had no great difficulty in finding the food, the bread in the widely scattered clearings of the farmers. Okay, this is a clear answer. This is a clear answer as in सीधा सीधा ये आंसर बच्चों दिया हुआ है। Okay, let's go to the question. I think we have the answer now. So the answer is, let's see, which of these did John Mayo have no great difficulty in doing? Finding food from among the farmers. Okay. Finding food among the farmers. Okay. Eating regularly every day. No, he had. Sometimes he used to
यूज टू स्लीप हंग्री, है ना, उसने बोला है, तो उसको खाना ढूंढने में तो दिक्कत आती थी। बट फार्मर्स के में बीच में खाना ढूंढने में दिक्कत नहीं आती थी, तो दिस इज नॉट द आंसर। स्लीपिंग विदाउट ब्लैंकेट्स ऑन सर्टेन नाइट्स, देखिए ऑथर ने बोला नहीं उनको उसमें डिफिकल्टी आती है नहीं, उन्होंने बोला कि समटाइम्स आई फेस हार्डशिप्स, तो नहीं। चेजिंग वुल्व्स दैट हाउल्ड ड्यूरिंग थ्रू द नाइट्स, नहीं। वुल्फ का मेंशन हुआ था कि वो एक रात को उठे थे उनकी आवाज से। चेजिंग वुल्व्स दैट हाउल्ड थ्रू द नाइट्स, उसमें उनको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं है। द आंसर इज ए। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड। How did the experience with nature affect John Muir? ठीक है बच्चों, लेट्स डू। हाउ डिड द एक्सपीरियंस विद द नेचर अफेक्ट जॉन लियो? ठीक है, as far as I remember, he felt he felt that spiritual happiness too, when he used to experience nature. ठीक है, एक बार इसके ऑप्शन देखते हैं। he felt spiritually fulfilled, he became a better botanist, he became a better botanist मतलब कि उसको साइंटिफिक फील्ड में द एक्सपीरियंस ऑफ द नेचर अफेक्ट जॉन न्यू, तो क्या उनने सिर्फ अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस के हिसाब से उनको वो एक्सपीरियंस अफेक्ट करता था? ही फेल्ट सक्सेसफुल आफ्टर कलेक्टिंग रेयर प्लांट्स, material success. I think it was all about the spiritual success, the spiritual fulfillment that he used to get. This is scientific success, this is materialistic success, तो आई थिंक ये नहीं होने चाहिए फर्स्ट वो में, मैं इसलिए हटा रही हूँ। दिस इज व्हाट आई थिंक दैट शुड बी द आंसर। ही एंजॉयड द ब्रीज इन द ग्लोरियस फॉरेस्ट। ठीक है, ब्रीज इज एक्सपीरियंसिंग ब्रीज इन द ग्लोरियस फॉरेस्ट would be one part if you see spiritually fulfilled, let's see उनने डिस्क्राइब किया था, मैं आपको बताती हूँ उन्होंने कहाँ पे डिस्क्राइब किया था। अगर आपका ये आंसर आ चुका है तो कंग्रेचुलेशन, वरना हम एक बार देख लेते हैं, देखिए ध्यान से। ओके, वन से। यस, रीड हियर। It is written, the injury to his eye proved to be less serious than he at first supposed. Sorry, this is not the 1 second. Okay, clear. Yes. See, with one of these backward slopes, I was able to wander many a long wild mile, free as the winds in the glorious forest and groves, gathering plants and feeding on God's abounding, inexhaustible spiritual beauty bread. इसका मतलब क्या है? He's enjoying he's enjoying the winds, he's enjoying the glorious forests, he's enjoying everything, and
He's feeding on God's abounding, inexhaustible spiritual beauty bread. So we can say that how was the experience of nature to John knew that he loved it. He the nature emotionally, sorry, spiritually gave him that spiritual fulfillment. It was not just about the material success or the academic success or the scientific success. It was rather more internal, and it was more about the spiritual fulfillment that he used to get. Therefore, द आंसर इज क्लियरली जिनका गलत रहा होगा वो प्लीज यहाँ से देख के थोड़ा समझने की कोशिश करें. द आंसर शुड बी 1 second A. Not this, not just scientific success, not just academic material success. One of the part. B is one of the part. Very narrow. Okay. Next question. According to this passage, in what way was Neo affected by his injury? Okay, देखिए इसको. ठीक है. According to the passage, in what ways was Neo affected by his injury? Okay, हमको मालूम है उनको इंजरी हुई थी, but that injury did not stop him from following his passion. What we understood. ठीक है. His injured eye healed very well slowly. बच्चों वहां पे लिखा था कि my eye. If let me show you. एक बार देखिए. He could not open his left eye during his exploration. No, he was he was able to open his eye. वो बोलते तो थे I could see from my left eye. जो लेफ्ट आई में आई गेस उनको इंजरी हुई थी. सो जो लेफ्ट आई था उनमें वो क्लाउड दिखता था, मतलब ही वॉज एबल टू ओपन. ठीक है. द हिज आई साइट वॉज इफेक्टेड बट ही वॉज एबल टू कैरी ऑन. यस, इफेक्ट तो हुआ था, इफेक्ट का मतलब थोड़ा बहुत हिंडर तो किया था, बट ही वॉज एबल टू कैरी ऑन. लुक्स गुड. ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंसल्ट मैप्स एंड स्टडी देम. ठीक है. ये जो है बच्चों, ये भी गलत होगा. क्यों? बिकॉज ही वॉज एबल टू मैप्स का जो मैप्स के बारे में जो दिया है कि मैप्स के चक्कर में जो उनको डिले हुआ था, इट टुक लॉन्ग टाइम, वो उनको इंजरी से पहले का दिया, नॉट आफ्टर द इंजरी. लेट्स सी, एक बार देखते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है उस एरिया को एक बार रेफर करते हैं हम लोग. लुक, जो लास्ट वाला ऑप्शन था वो लिखा है फॉर वीक्स आई हैव डेली कंसल्टेड मैप्स इन लोकेटिंग द रूट थ्रू द सदर्न स्टेट्स, वेस्ट इंडीज, साउथ अमेरिका एंड यूरोप, अ बोटानिकल जर्नी, बट अलास आई एम हाफ ब्लाइंड. इसका मतलब क्या है? हाफ ब्लाइंड होने से पहले ही डिड दैट. He took the time to see, to locate, to study them, to consult the maps and find the route. ठीक है. My right eye, trained to minute analysis, is lost and has scars hard to open the other. इसका मतलब क्या है कि मेरे को बहुत ऐसे मतलब आई डोंट हैव द हार्ट टू ओपन इट. ठीक है. इट डज नॉट मीन दैट ही वाज नॉट एबल टू ओपन इट. ही डिड नॉट हैव द हार्ट टू ओपन इट, और ओपन नहीं कर पाने में फर्क है. This injury to his eye proved to be less serious than he had first supposed. In June, he was writing to his friend, I have been reading and botanizing for some weeks and find that for such work, I am not very much disabled. ठीक है. For such work, I am not very much disabled. Shows his courage, shows his passion that even after suffering this hardship, he was he he was not disabled. इसका मतलब क्या है? The eyesight was affected, but he was able to carry on. He was not very much disabled. I was eager. Okay, see. So we went on. My poor eye is not better nor worse. इसका मतलब कि रिकवर नहीं हो रही ना वो हम लोग ये इन्फर नहीं कर सकते, हम लोग इसे ये नहीं समझ सकते कि उनकी आय रिकवर हो रही है. वो क्या बोल रहे हैं? माई पुअर आई इज नॉट नॉट बेटर नॉर वर्स, मतलब कि वैसी की वैसी है. अ क्लाउड इज ओवर इट बट गेजिंग ओवर द वाइल्डेस्ट
widest landscapes, I'm not always sensible of his presence. इसका मतलब क्या है? He is able to open the left eye. ठीक है. Let's go back to the question. One second. Okay. So his injured eye healed very well, healed well very slowly. No, he has mentioned that it did not. It is not better nor worse. So, मतलब I think we cannot comment on this because he has clearly said कि हमको नहीं मालूम वो रिकवर कर रहे हैं नहीं, बट हमको मालूम है कि वो बोल रहे हैं कि बेहतर भी नहीं हुई तो और बुरी भी नहीं हुई. He could not open his left eye during the exploration. No, his eyesight was affected, but he was able to carry on. Yes, because he had mentioned to his friend that that entire the injury has not disabled him. So matlab, he was able to carry on. He took a long time to consult maps and study them. No, he used to consult the maps and study those maps prior to his injury. So this is also wrong. The answer is C. Okay, next. When Mew said he botanized, he meant that, ठीक है, I think we know the answer. I think we know the answer. Still, अब देख रहे पर. ठीक है बच्चों, let's do. When Mew said that he botanized, he meant that he meant that when he was botanizing, तो जो जो हम लोगों को समझ में आया वो क्या था, वो बोलते थे I am exploring and botanizing, मतलब कि he is studying the plants in their natural habitat. Is that? ठीक है, study the plants and needs notes on them. Okay, but botanize का मतलब studied the plants and made notes on them. ये क्लियर नहीं कर रहा कि that he used to study the plants in their natural habitat. It could also mean that he used to study the plants on his terrace, maybe anything. So it is not the entire meaning of the word botanize. Studied plants in their natural habitat, yes, we can keep it. We can keep it on hold. This is not the answer. Studied plants during his exploration, yes. But it is vague. Vague मतलब कि बहुत open-ended सा है. Studied plants during his exploration, yes. But studied plants in their natural habitat is more closer to botanizing. Explore, okay. Botanizing मतलब कि exploration के दौरान वो plants को study करते थे. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि he was exploring and he was studying the plants. Botanizing मतलब कि he was studying the plants in their natural habitat. इसमें क्या फर्क हुआ बच्चों, दोनों में ये फर्क है कि जब वो एक्सप्लोरेशन कर रहे थे मतलब कि his purpose was to explore एंड एक्सप्लोरेशन के साथ साथ वो प्लांट्स भी स्टडी कर. बट ही वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बॉटनाइज या फिर botanizing is I am studying the plants in their natural habitats. Therefore, he was saying that I'm botanizing. It is too vague. Studied plants and classified them. I don't know that classification उनका purpose था. Classify करना उनका purpose था. बॉटनाइजिंग का मतलब हम लोग ये इन्फर नहीं कर सकते कि वो प्लांट्स को स्टडी कर रहे थे, तो उनको क्लासीफाई भी कर लेते, बट हमको इतना मालूम है ही वाज बॉटनाइजिंग मतलब कि ही वाज स्टडीइंग द प्लांट्स जब वो वुड्स में होते थे, जंगल में होते थे, ही वाज डूइंग दैट. तो स्टडीइंग द प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिtat इज द करेक्ट. ओके, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हिच ऑफ दिस सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा सेंटेंस सच नहीं है?
Which of the sentences is not true देखते हैं. John Mayo explored several new places even on his way back home. हाँ उन्हें ऐसे इलिनॉस के लिए बताया था कि that I used to visit places. तो ये तो सच है. तो ये तो ट्रू है. तो therefore we have marked it out. हमने इसको निगेट किया. There was a cloud over the landscape he traveled. नो, क्लाउड उन्होंने कहाँ यूज किया था? पार्शियल ब्लाइंडनेस के लिए, उनकी जो इंजरी उनके लिए यूज किया था. दैट आई टू सी अ क्लाउड, मतलब कि उनको उनके आई इंजरी के चक्कर में उनको वो, वी कैन सी दैट उनको जो पार्शियल ब्लाइंडनेस है उसके चक्कर में वो क्लाउड दिखता था. ही वाज नॉट लिटरली सीइंग अ क्लाउड ओवर द लैंडस्केप ही ट्रैवल्ड. दिस इज नॉट. he was committed to being he was committed to being a botanist more than ever. Yes, he said that कि this injury, इसके बाद से मुझे प्लांट्स और प्रेशियस लगने लगे हैं. वी कैन सी दिस, एक बार देख लेंगे ये. बट दिस इज ऑल्सो ट्रू. ही रिकॉर्डेड हिज एडवेंचर्स इन हिज नोटबुक. हाँ, ये तो लिखा ही है कि ही यूज्ड टू यू नो यूज्ड टू नोट डाउन ऑल हिज एडवेंचर्स इन हिज नोटबुक. तो ये भी सच ही है. देयरफॉर द आंसर इज दिस. लेट्स सी जहाँ पे इन सब बाकी सबके रेफरेंसेस हैं. ठीक है. और एक बार क्लाउड वाला भी देख देख लेते सॉरी. लुक, सबसे पहला जो थर्ड था, टू ऑल मी प्लांट्स आर मोर प्रेशियस देन बिफोर. इसका मतलब कि ही हैज बिकम ही वाज मोर इनटू स्टडीइंग द प्लांट्स देन बिफोर. ठीक है. तो ये तो हो गया. आई वाज ईगर टू सी इन एन अकाउंट रिटन आफ्टर द एक्सकर्शन ही सेज आई वाज ईगर टू सी इलनास फ्रेंड्स ऑन माय वे होम सो वी वेंट ऑन दी being near the center of the state thence. इसका मतलब क्या है कि वो घर आते हुए भी बहुत जगह एक्सप्लोर करते आते थे. ओके, दिस वाज आल्सो डन. ठीक है. एक बार क्लाउड वाले भी देख लेते हैं बच्चों हम लोग. My poor eye is not better nor worse. A cloud is over it. Cloud is over what? On my eye. ठीक है. Not the literal cloud, but the cloud over the eye, as in the injury. He's describing. He's pointing the injury here. But in gazing over the widest landscapes, I am not always sensible of its presence. ठीक है. तो it is not a literal cloud. It is just, I can say that it was the partial blindness that he had after the injury. So एक बार वो क्वेश्चन देखते हैं. So we can say that this is true. John Muir explored several places on his way home. Okay, ये तो सच है. So this is not the answer. There was a cloud, a literal cloud over the landscape he traveled. No. He was committed to being a botanist more than ever. Yes, because he found the flowers more precious than before. He recorded this adventure in his notebook. ये तो clearly सच ही है. The answer is B. ठीक है. तो बच्चों, this is how we read the RCs. This is how we do the passages. पैसेज पढ़ते टाइम व्हाट वी डू, हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसका मेन आइडिया समझते हैं, सबके मेन आइडिया समझते हैं, फिर चेन ऑफ थॉट समझते हैं, देखते हैं कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर. ऑथर पैसेज के थ्रू बोलना क्या चाहता है. इस पैसेज में ऑथर सिर्फ डिस्क्राइब कर रहे थे, क्या डिस्क्राइब कर रहे थे? न्यूज पर्सपेक्टिव, उनका नजरिया नेचर को लेके, हाउ हिज हार्डशिप्स एंड हाउ ही ओवरकम दैट. उसके बाद जब क्वेश्चंस करते हैं तो बच्चों हम सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं प्रिडिक्ट करने की आंसर. अगर वो हमसे नहीं होता फिर हम ऑप्शंस पे जाते हैं. प्रेडिक्ट करने से क्या होता है बच्चों, हमको हम थोड़ा सा घूमते नहीं है, मतलब हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते. मतलब कि जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हेन म्यो सेड ही बॉटनाइज ही मेंट दैट, तो मैंने सोचा था बॉटनाइजिंग, बॉटनाइजिंग का मतलब क्या था कि जब वो बोलते थे आई यूज्ड टू बॉटनाइज, आई एम बॉटनाइजिंग, इसका मतलब क्या हुआ? ही स्टडीइंग द प्लांट्स इन देयर हैबिटेट्स, है ना. वो जब एक्सप्लोर करते हैं, जब वो जाते हैं वहां पे, तो उनके नेचुरल हैबिटेट्स में वो पढ़ते हैं उस चीज को, उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं. देयरफॉर इनमें मुझे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है बाकी सारे ऑप्शंस. तो हम सबसे पहले बच्चों हम लोग वो वाले ऑप्शंस निगेट करते हैं जो हमको लगता है वो क्लियर आंसर्स नहीं है, हमारे प्रिडिक्शन से मैच नहीं कर रहे हैं. एंड देन हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाला आंसर जो है वो एकदम एक्यूरेट है, जिसमें कोई भी
कोई भी गलती नहीं है, मतलब यू कैन से दैट ओके दिस इज वेक, this was not the purpose, this was not the purpose, okay this is what we meant. बच्चों हम इस हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं. If you have any doubts with this RC or anything else, you can contact us any day. You have the details, or you can just leave a comment asking for the details if you do not have. तो बच्चों आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप आप लोग प्रैक्टिस करते कर रहे हैं और करते रहेंगे. एंड जो भी है बच्चों, कहीं ना कहीं जब आप लोग बहुत ज्यादा रीड करते हो, जब आप थोड़ा क्यूरियस वगैरह होते हो, जब आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हो ना, आप पढ़ते हुए रीड करते हुए, तो आपको ये सब चीजें बहुत आपके लिए ना बहुत एफर्टलेस हो जाती हैं. तो इन चीजों को पढ़ते रहिए, वैसे कोशिश करते रहिए. तो वील मीट नेक्स्ट वीक. बाय बाय.